तो हमारे रिलेशनशिप में रहते हुए ही हुआ है that I've like got infatuated towards someone. When I lost my job, पिछले 9 साल से तो आप मेरे साथ हो. तो पिछली बार कब था? अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे. trying to बताओ अब. attempt. बताओ. मतलब ये राज-वाज नहीं झेले जाते मुझसे. I have a confession to make. What? I'm addicted to soft. That is true. I can completely verify this. It is छोटी सी true. डिब्बी के अंदर सौंफ अपने पास रखी हुई है. जिसको देखकर मैंने बोला था ये क्या मजाक है, because considering his appetite for soft, he has been carrying these big boxes and those also do not suffice. But ठीक, I will help you through this addiction, Mitu. I'm here for you, for better and for worse. क्या आप किसी चीज के लिए like addicted हो? Like you are a teetotaler. ना दारू पीते हो ना. I am your nasha. But apart from me, this cocaine equivalent. वही. Equivalent. नशा. What is your nasha? तेरा नशा. Sorry. Thank you for bringing it back to me. Nasha, I don't know. I think I will be honest. I think I'm obsessed with my phone these days. I'm just constantly on the phone, whether it is social media, whether it is reading something, whether it is watching something on YouTube, whether it is listening to something on Spotify. It is always. It is अव्वल दर्जे का addiction. Yeah, I admit. But see, right now I'm without it. Although it's in front of me, but अगर आप भी बब्बा की तरह addicted हो, तो इस addiction को एक अच्छे direction में लेके जाओ और हमें subscribe करो. YouTube पे अभी के अभी subscribe button दबाओ. Right, like, share and subscribe. That's exactly what. और घंटी भी दबा देना ताकि. Yes. My God, मेरी गले में ये ना सौंफ अटकती भी रहती है, लेकिन एक असली नशेड़ी की तरह मैं अपना नशा छोड़ूंगा नहीं. Sorry, वो क्या कह रहे थे आप? Like, share and subscribe, please, ताकि हम जब भी नया content डालें आपको एक notification आ जाए. Goes without saying, we're not really professionals, but what we are here is to help in some way, in whatever way we can. I don't know about him, but I am a professional soft eater. So if you have any soft related You are questions, not paid. please You are direct not towards paid. me. You are not paid to eat soft. So you're not थोड़े really टाइम में I'll be a paid off soft. पौधा होता है शायद उसका, not paid. But I know myself. I have that caliber of becoming. सोचो तो कम से कम पेड़ की सोचो ना, क्या पौधा क्या बनना है. Alright, so this message is from an anonymous person, 21 years old, from Mumbai and works as HR in the hospitality industry. Okay. Alright, so his message says, I met a guy on Tinder. We had a casual first meeting, and even then, we both felt special connection as we left the metro station. After that, we had several more meetings, enjoyed our time together, and hooked up. Now, I'm starting to feel attached to him, and I'm not sure how he feels, though I think he also might be feeling the same way. He takes care of me and understands me. I'm not sure how to express my feelings to him, and I'm afraid of being rejected. What if he doesn't feel the same way? I find myself overthinking this situation a lot. अच्छा, इसके क्वेश्चन पे आए उससे पहले I want to ask you something. Have you ever fallen for someone and not, told them that you feel that way? Yeah, a lot of times actually, I think. Lot of times. I'll tell you why. What? पिछली बार कब था? अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे. Okay. Guys, अपने बॉयफ्रेंड से कुछ भी उगलवाना हो तो उसके साथ पॉडकास्ट करो और उसके बाद है ना बीच शूट में उस पे एक क्वेश्चन फेंक दो. हाँ जी, सॉरी. और उसे बोलने भी नहीं दो. बताओ मैं सुन रहा हूँ. This is the third time I'm trying to. बताओ अब. Attempt. बताओ. Okay.
Why I said that? Because I think I know my pattern and my personality in terms of whichever person I like. I probably would not word it directly, but I will find my ways to show it to them. That is more me. So maybe I'm not as confrontational in words, which is why I will probably not say it to them to answer your question, but I will definitely show it to them that I like you and I'm feeling for you. And I think that's a very safe space for me because while I'm doing this, I'm also seeing how it is being received, and that gives me a message ki, whether the person is interested in me or not. पिछले 9 साल से तो आप मेरे साथ हो, तो पिछले 9 साल से मैंने कितनी बार आपको इनकी बातें सुन के ऐसा लग नहीं रहा है कि ही इज टॉकिंग टू समथिंग व्हिच हैज हैपेंड वेरी रिसेंटली. What is this chucky behavior? सर कमेंट्स में मुझे बताना व्हाट आर यू फीलिंग लाइक व्हाट्स. Yes, since What's the the last vibe? 9 years, I don't think I have ever done things for him to make him feel that. Do you think this conversation was about us? It was for me. Okay, Bitu. Okay, why don't you tell me? What about you? I don't think After that you've accused me. या सो मेरे पास तो सारे सबूत और सारे गवाह मैं अपने पास रखता हूँ हमेशा. दैट्स द पॉइंट. मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था जो आई वाज प्रिपेयर्ड ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा कि मुझे ऐसे कटघरे में खड़ा कर दो. कटघरे घड़े कटघरा ही तो बोला है, और क्या गलत बोला है मैंने. सो आई थिंक बहुत अमेजिंग चीज है ये दैट कटघरे देयर इज क्या. सॉरी, घड़ा सही बोला था ना, मतलब मैंने उसको घड़ा बना दिया. अब उस घड़े से बाहर निकलो. सो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि देयर इज नो वन जिसको मैं जानता हूँ और जिसके लिए आई फॉलन फॉर, और वो इंसान नहीं जानता दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर देम. चाहे वो कॉलेज में था, चाहे वो वर्क प्लेस में था. I've been that person जो हमेशा सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बता देता है. ज़्यादा टाइम तक ये इशारों वाला गेम आई डोंट प्ले. एंड अगर वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है ही नहीं तो फिर तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, इफ दोज फीलिंग्स आर वेरी स्ट्रांग आई मोस्टली टेल देम टू देम. एंड इनफैक्ट ये तो हमारे रिलेशनशिप में रहते हुए ही हुआ है दैट आई हैव लाइक गॉट इन्फैक्चुएटेड टुवर्ड्स समवन. मैंने उसे भी बता दिया, आपको भी बता दिया, ताकि पता नहीं मतलब ये राज नहीं झेले जाते मुझसे व्हेन इट कम्स टू माय ओन फीलिंग्स. सो या मतलब मैंने तो बताया. I think I don't want to overgeneralize this, but I think Yogi's behavior is also very classic Sagittarian behavior. And हो सकता am है. I also typically Scorpion in that sense? Please do let us know in the comments if that's what it is. मुझे लगता है मैं टिपिकल साजी हूँ. I don't know about If there is any typical saji behavior. Either way, chalo, let's get back to the message here. अच्छा, हमारे anonymous 21-year-old anonymous मुंबई के 21 साल के ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है. यू आर 21, यू हैव मेट समवन ऑन टिंडर. ओवरथिंक करना बंद करो. आई नो ओवरथिंकिंग आजकल हम सबकी हॉबी बन चुकी है. बट इफ़ यू आर फीलिंग फॉर दिस पर्सन, इफ़ यू फील एंड यू हैव हुक्ड अप ना, तो मतलब कोई तो वहाँ से भी कंसेंट तो कुछ लेवल पे तो है. मे बी दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर एंटायर लाइफ विद यू, बट दे वुडंट माइंड स्पेंडिंग सम टाइम विद यू. तो सम टाइम को ही फ़ायदा उठाओ. जस्ट गो and talk to this person. I know the worst he can say is no. understatement होता है, क्योंकि वो किसी से नो सुनना इज मतलब ऐसा लगता है दुनिया ख़त्म हो जाएगी. बट दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है भाई, ट्रस्ट मी. बहुत सारी हम इस जो दुनिया है ना, उसके एक दुनिया के एक प्लैनेट के एक स्टेट के इतने से इंसान हैं हम. सो या जाके बोल दे, जी ले अपनी ज़िंदगी.
प्लीज इसकी एडवाइस मत सुनना, इतना ज़्यादा अनरोमांटिक तरीके से he's just deduced it. You know what? I'm gonna say that I'm really excited for you. I think the minute I finished reading your message, I was particularly very excited because I love love, and that's exactly what you are feeling. You know, the initial phase, the butterflies in your stomach. Uh, I think you should just go ahead with this flow, enjoy this, embrace this, and focus on that rather than the fact that कि अगर मैं उसे बता दूंगा तो शायद गड़बड़ी हो जाए. See, the thing is, like I said, I was just saying a while back that you don't have to really necessarily propose to him to really tell him that you love him. There are ways that you can do that, even with your actions, with your with your thoughts of how you feel for him, and with what you show to him in many ways. So I think you can use that if you're not really wanting to be as confrontational. Directly proposal पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. If you do not feel, again, I'm not really stopping you, but I'm just saying that that should again give you some sense of that if the other person is also reciprocating to you. So I think, yeah, that will make you even more confident with what you wanted to do. And I really, really am happy for you, and I'm excited for you. So please do let me know after whatever you decide to do. And yeah, just let me be a part of this journey as well. Sorry, I'm asking to be a part of your journey, but yeah, that's what I would want to do and know. So yeah, that's my wish for you. So all the best. एक और तरीका भी है बाय द वे. Hmm. यू कैन टेक हम दोनों का जो सोल्यूशन है, यू कैन स्टार्ट विद व्हाट बब्बा सेड एंड अपने जेस्चर्स से उसे बताने की कोशिश करो, एंड देन मे बी whenever you feel the time is right, you also verbalize that. इससे क्या होगा, you will be easing it out. एकदम से उसको नहीं, किसी शॉक में नहीं डालोगे. एंड when you will be doing all of this non-verbal communication, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान कितना इंटरेस्टेड है, कि उससे क्या बताना भी चाहिए या नहीं बताना चाहिए. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट रूट. तीनों रूट्स तुम्हारे सामने हैं और choice is yours. And I would want to end this message of yours with a dedication to you. Please go listen to the track, or if not listen to the track, at least read the lyrics of it, because they're beautiful, and I think they should also give you a message in some ways. It's a beautiful song sung by Lata Mangeshkar. It's way back ka song. It's called हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, प्यार से छू के उसे रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो, सिर्फ एहसास है उसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो और कोई नाम ना दो. Okay, so this was not your therapy session and this was definitely not ours. लेकिन if you are watching this and अगर ये देखने के बाद आपको लगा हो कि it did something to you, या अगर आपको लगता है कि कुछ भी वैल्यू हमने ऐड करी है, तो जाके सब्सक्राइब कर लो और स्पॉटिफाई पे फॉलो कर लो, कोई रेटिंग दे दो ताकि हमें भी लगे कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पे हमारे बीच में. ओके, सो मूविंग ऑन टू हमारी अगले मैसेज की तरफ. दिस मैसेज इज अगेन अनोनिमस. दिस पर्सन इज 25 फ्रॉम पटना. सो ये लिखते हैं, आई गॉट अ जॉब, बिकेम इंडिपेंडेंट एंड केम आउट टू माई फैमिली. It didn't go well and was really upsetting. The next few months were hard emotionally. Then in July, I lost my job and I had to depend on my parents again. The job market is tough and I haven't found a new job yet. I'm feeling very confused and lost. But after listening to this message, I somewhere feel there's some sense of similarity here, because you also moved out of your family, then came out, then you're now back. In my situation, I remember I became financially independent and moved out of my parents' house. And yeah, after many years, when I lost my job,
I have now moved back to my parents' house, and it's it's different. It's I'll not say it's difficult, thankfully, because my parents are very accepting and very supportive. लेकिन एक चीज़ होती है कि when you move out of your parents' house, you you become a totally different person. You know what you like, dislike, without thinking कि oh God, मेरी फैमिली क्या सोचेगी. Even for example, if you are stepping out of the house and you choose to wear something which probably your parents or your family wouldn't approve of, but you personally are comfortable wearing that, that can only happen when you move out of your parents' house. And then you develop, then you become your own personality, right? You become that person जिसकी strong opinions होती है चीज़ों को लेके. And once you become this person, it's very difficult to go back to a setting जहाँ पे you are not. So वो एक वो कहते हैं ना, माँ हाउस माँ rules. When you are in your ma's house, then it's ma's rule, not ma rule. So it's very difficult to adapt to that situation. In your situation, I think वो और complex हो जाता है because they are not accepting. वो कभी भी सपोर्टिव नहीं थे, तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. आई एम श्योर यू मस्ट बी ऑल्सो डीलिंग विद अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ अपने माइंड में कि मैं ये चीज़ करूँ ना करूँ. द ओनली थिंग विच इज़ हेल्पिंग मी राइट नाउ and which will 100% help you is patience, because it is your because your parents are again in charge of your life in some tarika, because you are dependent on them. You said you are dependent on them. If you are dependent on someone, then फिर भाई उनके जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा विदाउट परमानेंटली चेंजिंग योर ओन पर्सनैलिटी. आई वुड से कुछ डिसीजंस ऐसे लो जिंदगी में जिनसे उनको बहुत बड़ा धक्का ना लगे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक यू डोंट बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. यू डोंट हैव टू यू नो आई एम समवन जो हमेशा बोलता है यू शुड कम आउट एंड जिससे भी मिलो यू शुड टॉक टू देम ओपनली अबाउट योर सेक्सुअलिटी एंड एवरीथिंग. बट इन दिस सिचुएशन आई वुड से तुम्हें प्राइड का झंडा लहराने की ज़रूरत नहीं है इस समय. एज लॉन्ग एज यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, तो खुद को टाइम दो जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाओ, एंड देन फिर जियो ना अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीनी है, बिना अपने पेरेंट्स से झगड़ा करे, बिना उनसे इस सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स किए बिना. आई फील ये करना विल बी you will be also respectful towards your parents and their ideology, and खुद को भी कम ही नुकसान पहुंचाओगे, वरना क्योंकि ओवरनाइट वो तो समझने वाले हैं नहीं. अभी सिचुएशन ये है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन देम, तो थोड़े टाइम के लिए जस्ट ले लो एंड जो भी वो एडवाइस दें उसे ले लो. लेकिन इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. फोकस ऑन फाइंडिंग अ जॉब एंड देन लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर, one day at a time. What do you think, Baba? ऐसी सिचुएशन में क्या करें? I think I will want to start with this message so that you remember this, and that should be the foundation of your whatever you want to do going further, because it's very important, especially in moments like these when you think that you've hit your lows low. Remember that you were financially independent. Remember that you had the courage to come out to your family as well, and remember that you had a great job that allowed you to do all of that, right? Which means that you were all capable of all of that. So remember that just to begin with. Then moving on to, of course, let's also face our reality. It is a bummer that you're facing a situational low here, but please understand that I'm using the word situational low here, which means it's just a phase. While it might not look like one, or also you don't have to fight all the battles all at once. You don't have to fight for
your acceptance within the house as well as your dependence toward in that situation. I think थोड़ा सा अभी survival mode पे आओ, thrive हम बाद में करेंगे is what I'm just trying to say. पता है बाबा, आई फील कि हमारी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में पीपल हु डोंट टेक द यूजुअल पाथ, हु आर डिफरेंट. You could be a single parent, you could be an unmarried woman, you could be an unmarried 40-year-old man. People look at you very differently. Your own family looks at you very differently. उस समय I know that your job, your career, your financial stability means a lot to you. It empowers you to be yourself. So हमारे लिए I feel for queer individuals financial independence और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि a lot of us don't choose to have children. So हमें पता है कि यार हमारे बुढ़ापे में हमको ही खुद का ध्यान रखना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे. वी नीड टू स्टे इन अ सर्टन सोसाइटी, किसी ऐसी जगह पे रहना पड़ेगा हमें जहाँ पे लोग हमें थोड़ा कम जज करें. सो हर तरीके से हमारे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और होने की ज़रूरत पड़ती है. एंड जब ऐसे पाथ में आप चल रहे हो, when you choose that struggle because you want to be yourself, I know it's very very difficult जब आपको वापस धकेल दिया जाता है to start from the scratch, to again be dependent on someone. लेकिन just realize this कि जब आप नीचे जाते हो, जो चीज़ नीचे जाएगी वो वापस ऊपर आएगी ही आएगी. दैट्स द नियम ऑफ दुनिया. तो अभी हम यहाँ हैं तो हम वापस ऊपर आएंगे, क्योंकि सूरज ढला है तो वापस उगेगा ही. सो विद दैट आई थिंक ये आपका थेरेपी सेशन तो नहीं था. और अगर आपका ये थेरेपी सेशन था, इन केस जो अभी देख रहा है, तो जाके सब्सक्राइब कर लो. मैं तो बस यही कहता हूँ. All right, with that, back on with a new message for not a therapy session. Let's see who this next person is. All right, so this person is called French Brownie, a 33-year-old IT professional from Dublin. Interesting. हम लोग पहुंच गए हैं यूके. Not a therapy session is now in UK. UK, yeah, Dublin is in Republic of Ireland, I think, no? तो मतलब अच्छा नहीं है. Northern Ireland. यार मेरी ज्योग्राफी खराब है. Actually, मेरे को तो लगता है कि पड़ेगा यूके now में that ही you've said it. Ciao. हाँ मतलब वहीं आसपास आप समझ गए ना, उस वाले एरिया में वही. See? रमेश नगर, राजौरी गार्डन. नहीं, बिल्कुल. एक ही बात. It's not the UK. It's a separate country called the Republic of Ireland. तो द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पहुंच चुका है. नॉट अ थेरेपी सेशन. यूरोप तो हम पहुंच ही चुके हैं. अब बस अगला स्टेशन बोरीवली है. हाँ जी, फ्रेंच ब्राउनी. Yes. All right. Thank you. All right. So the message says, assuming this is not their like actual name. It'll be so cool to have a name like French brownie, na? Yeah. But like, I think French brownie is a cool name again. But then with Indian last names after that, I don't think it will become French brownie Jen. It will remain cool anymore though. बिना एग के होगी वो ब्राउनी, बिना प्याज लहसुन के भी. All right, so the message says, I have been struggling for 5 years with my family's acceptance of my relationship with another girl. Oh, lesbian representation. Yes, that's also a first. नहीं, हो चुका है भाई. Oh yes, my bad. All right, so the message says, I have made many compromises and promises to try and make them happy, but it still doesn't feel right. Every conversation feels like I'm on trial, defending my feelings against comments about Western influence and abuse towards my partner. This has severely damaged my once close relationship with my mom, who seems unaccepting of anything she does not agree with. I know it's hard for her, but her denial and resistance have made me emotionally distant, leaving both of us
feeling isolated and lonely. How can I deal with my family's rejection and restore my relationship with my mom while maintaining my own happiness? Ooh, ये फ्रेंच ब्राउनी नहीं है, ये अगेन फ्रेंच रायता है जिसमें सब कुछ है. I thought you were going for revolution, but okay, Raita also works. No, it's रायता. Clearly it's रायता. पिछले 5 साल से ये पक रहा है ये रायता. और ब्राउनी जी आपने बहुत बहुत साल लगाए हैं. Brownie ji, sorry. Okay, listen, be serious, betu. अरे आई एम बीइंग वेरी सीरियस. ब्राउनी जी आपने 5 साल लगाए हैं अपनी मॉम और अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बट वो नहीं हो पा रहा है. एंड जहाँ पे माँ आ जाती है ना, बहुत ही ट्रिकी चीज़ हो जाती है. एंड वी से दैट यू नो लव इज़ ब्लाइंड, लेकिन माँ का प्यार तो ओवर अंधा होता है. कभी कभी खुद के बच्चे की खुशी नहीं दिखती है उनको, वो इतना प्यार करते हैं उसी बच्चे से. एंड what do you do when you are dealing with someone who is visually impaired? What do? You hold their hand and you lead the way, right? You'll have to do the exact same thing. I know 5 साल हो चुके हैं, शायद और 5 लगेंगे. The only thing here is it's your choice. Ultimately एक point के बाद क्या आपको ये रिलेशनशिप चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी माँ का, या नहीं चाहिए? Because clearly you don't want to quit on your love relationship. And you said you were very close to your mother. So I'm assuming that 5 साल हो चुके हैं उसके बाद भी you are still thinking about it. Then the only तरीका left is to hold their hand and wait करो कि कब वो भी acceptance का हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे. That's the only way you can deal with this. Take as many breaks as you want from this equation. ज़रूरी नहीं है हर रोज़ एक ऐसे इंसान से बात करना जो आपके एग्जिस्टेंस और आपके प्यार को हर बार डिसमिस ही करता रहे. सो whenever you feel that you are emotionally equipped in dealing with it, दोबारा से उस रिलेशनशिप पे काम करना शुरू करो. You don't have to just, ये नॉन स्टॉप चीज़ नहीं हो सकती है. ब्रेक लो, बट कीप एट इट एंड कीप होल्डिंग हर हैंड. आई थिंक, आई फील थिंग्स विल गेट बेटर इवेंचुअली, बिकॉज है तो वो माँ ही ना. इसमें एक और एंगल मुझे समझ में आया बब्बा, दिस थिंग अबाउट NRIs, क्योंकि ये मुझे क्लियरली मुझे लग रहा है क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का नाम लिया है उन्होंने. सो दिस पर्सन, आई एम श्योर द पेरेंट्स आर फ्रॉम इंडिया. And this person is a second generation Indian in Do you Dublin. think कि इंडियंस जब वो बाहर जाके सेटल होते हैं वो थोड़े ज़्यादा रिग्रेसिव हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आवर इंडियन पेरेंट्स? I don't know if I would want to use the word regressive. या वो वहीं रुक जाते हैं, उनके लिए मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी? Because their only yes, reference in a is lot of Bollywood. ways, yes. But I think you also become a little more. आप थोड़े से डिफेंसिव होने के चक्कर में ऑफेंसिव हो जाते हो, in the sense that because you have carried your desh with you wherever you've gone, right? And you'd want to protect it no matter what, especially when you see, and then you see everything around you as different, and that itself starts to feel like that's being that is attacking your own culture, which is why they become even more protective and more harsh in that sense, that they want a clear distinction कि नहीं ये बाहर का है और ये हमारा है. So I think that is obviously a struggle that you are dealing with. जबकि होमोसेक्सुअलिटी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ही नहीं. दैट्स द It's not a सबसे concept. हाँ, It's मतलब not a concept to इट्स begin नॉट with. समथिंग जो वेस्टर्न कंट्रीज हमारे लिए लेकर आई थी. Yeah, it's just Homosexuality that has been in this part of the world as well. But yeah, see, but because generationally उन्होंने यही देखा है हमारी इंडियन सोसाइटी, we can't really diss the fact that we are in a society that has been systemically dismissing our existence, whether it is in our scriptures, whether it is in our conversations and in society. So of course, उसका result तो यही होगा ना, that the entire society that is growing up
grows up with that ignorance and hence starts to believe that ये हमारा है ही नहीं. So yeah, see, that is a larger conversation to have. But coming back to, I think, you and your situation, I think, I don't know why am I in this mood, but I hope that this song line helps you understand what you have got to do going further. Is इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या. You have to really also protect your love here. And you've already said that you have tried. You have already been making compromises. There will come a point that you will reach the saturation for that. And uske baad mein, maybe the point might seem very small, but वो फिर जब फटता है तो फिर वो पूरी तरह से ख़राब कर देता है सारी चीज़ें. सो डोंट रियली लेट योरसेल्फ ऑल्सो इतना अपने आप को बांध के मत रखो कि एक ऐसे वर्ज पे आप पहुंच जाओ कि आप फट जाओ अपने ही रिलेशनशिप में अपनी मदर के साथ में. एंड दैट रियली इज, देन देयर इज़ नो वे बैक टू दैट. सो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा. यू विल हैव टू पुश बैक ऑल्सो. While you're making compromises, you will also have to make your parents in some ways compromise and make them learn. See, it's not the easiest for them either. It's not easy for us to come out and start living our reality and truth as well. But what did we decide? That we don't want to really compromise anymore on that, right? So, of course, that change is difficult, not only for you, it has been for you, but also will be difficult for your mother. So that change has to be kind of pushed upon them. It might just feel like कि आप उनको situation में डाल रहे हो, but आपने नहीं डाला है. You were born like this. You just chose to accept the truth. So don't go on with this guilt that आप अपनी mother को इस situation में डाल रहे हो और you're making her feel all of this. It is her journey that she has to take, and you have to kind of nudge her to move towards that. I also feel चेक करो कि क्या तुम्हारी जो मॉम है वो कोई पाकिस्तानी ड्रामास तो नहीं देख रही है. बिकॉज आई टेल यू वाई. आई टेल यू, अरे ऐसे जजमेंटल लुक तो वहाँ पाकिस्तानी ड्रामास में ही मिलते हैं. क्योंकि मे बी आंटी जी ने मैनिफेस्ट किया था हमेशा से एक दामाद, बट मिली उनको बहू. और बहुओं के साथ जो रिलेशनशिप है इन पाकिस्तानी ड्रामाज में, it's not the healthiest one. So it is coming from there कि बहू के साथ कैसे बिहेव करते हैं, जबकि उन्हें पता चलेगा कि यार दामाद तुम्हारे को कोई कुछ निहाल नहीं करेगा. I don't think Pitu, it's coming. So ultimately चेक करो कि क्या तुम्हारी मम्मी पाकिस्तानी ड्रामास देख रही है या नहीं देख रही है. नहीं देख रही है तो उनको दिखाना शुरू करो, काफी अच्छा है, मैं रेकमेंड करूंगा. See, I think this is where it was coming. I don't think it was coming from Pakistani dramas. It is your association with Pakistani dramas of late is where it is coming from. मैंने नहीं देखा सच्ची में, बट मेरे घर वाले देखते हैं, मुझे पता है. Yes, so that's exactly the influence I'm talking about. See, the thing, बिट्टू एक मिनट, इंडियन सीरियल्स में बहुओं के साथ में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बट आजकल ज्यादातर लोग देख रहे हैं ना. बिल्कुल भी बकवास. हमारे इंडियन सीरियल के अंदर अब नागिन बन गई है बहू, तो वो डस लेती है, तो इसलिए लोग वैसे ही पंगे नहीं ले रहे. पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर अभी भी वो बहुएं रो रही है. That is, I'm sorry, I don't think there is any difference, and I think how the society somewhere is in Pakistan it's a lot similar to ours as well, in a lot of ways. And I think हमारे, yes, culturally maybe थोड़ा सा difference होगा, but I think more or less we are the same. We look the same, we feel the same. We speak also in a lot बहुत better है हमसे. We speak the same language also in so many ways, whether it is Sindhi or it is Punjabi. So yeah, French brownie जाके चेक करो कि क्या मम्मी पाकिस्तानी सीरियल्स देख रही है या नहीं देख रही है. अगर देख रही है तो बंद करवा दो, और अगर आप देखना चाहती हो पाकिस्तानी सीरियल्स तो हमें भी बता दो कि आप कौन से देख रहे हो आजकल. कोई रिकमेंडेशन. What is this Pakistani serials obsession, Betu? Listen, no, forget about all of this. Be a rebel, but for your own happiness. Please just do that. French brownie, yes. I think remove the brownie and bring in the revolution there. Although I think वो थोड़ा सा ज़्यादा ही
खराब था, खून खराबे वाला था. But okay, anyway, just get the reference there. Like, revolution, थोड़ा सा rebel बनो अपने लिए. और मुझे तो भूख लग गई है ब्राउनी के नाम से. You're such a sweet tooth. Yeah. Okay, this was definitely not a therapy session because we are not professionals. But hope it helped. Yeah. And जाने से पहले कुछ है आपके पास, कुछ लाए हो recommendation? नहीं. आप एक minute. I think today's recommendation has to be a Pakistani drama that he has been obsessing over. Please, why don't you tell? Pakistani drama. अरे बाबा, वो कौन सा था जो हम दोनों ने साथ में देखा था? शमीम नाम था उसका. शमीम. हाँ. क्या था? So basically, this character has been shown, the protagonist has been shown effeminate. उसकी शादी नहीं होती, but then somehow he gets married to a woman who has a child, and now there is this entire family, जो family की एक unit बन जाती है of this man. Wait, I'll look it up. Mrs. and Mr. Shamim. Yep, Yeah. that is Pakistani drama you must watch. स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग है, उसके बाद फिर से वो रोना धोना ही लग जाता है. तो या पहले के कुछ एपिसोड्स आप Yeah, देख but सकते हो. it does have a very straight up queer angle. Yeah. And in a lot of ways they're actually showing people and characters in that setup who are also considerate and accepting of who and how Shamim is. So I think for that also you should be watching this and also see that there is similarity there as well. See? Yeah. See करती मैं मरूं. So yeah, and if you have any other Pakistani drama recommendations, comment section में जाके आप बता सकते हो. देखना तो मुझे तो नहीं देखना, कबीर को दिखा दूंगा. And yeah, please, if you are liking whatever जो यहाँ पे चल रहा है, Spotify पे जाके हमें फॉलो करो, रेट करो शो को. इट रियली हेल्प्स. YouTube पे सब्सक्राइब करो, Instagram पे फॉलो करो. कुछ करिए, बस बड़ा बोले. क्या बस बड़ा बोले? नस मेरी खौले. I think we'll discuss that off camera. But with that was not your therapy session with Kabir and Yogi. And with this, just gracias for watching. Ditto Joe.